Hello everyone. In this lecture we are going to study about the torque converter. Okay, so basically what is this torque converter and what is the function inside of automobile vehicle? Okay, that we are going to study. So basically a torque converter is generally a type of fluid coupling that is capable of producing torque. Okay, so as you can see, you have idea about this fluid coupling. Okay, and eventually I will also tell how this torque converter is different from fluid coupling. Okay, so there is a little bit difference between these two. Okay, so basically why it is used, because it is simply the replacement of this clutch. Okay, that is to be used for automatic transmission or automatic transmission vehicle. Okay, so this is the torque converter that we are talking about. Okay, this is looking like this, something from outside. Okay, so it is a device which performs a function similar to gearbox, but still uh, why we are using this, not gearbox. Okay, and the function also that we know that it is used to increase the torque while reducing the speed, but whereas gearbox provides only a small number of fixed ratio. Okay, so the torque converter provides a continuous variation of ratio from the lowest to the highest. Okay, so that is why this is the best option between the torque converter and this gearbox. Okay, so we'll also list that point also. Okay, in gearbox, limited number of fixed ratio or gear ratio that we are talking about, but torque converter provides continuous variation of ratio from the lowest to the highest. Lowest to the highest. Okay, basically we will come to know that you will come to know that this torque converter usually used in the lower gears. Okay, not in the higher gear or higher speed. Okay, because the torque is much needed in case of the lower gears. Obviously in the higher gears or the top gear, we do not need those amount of or higher amount of torque. Okay, so basically this torque converter is designed to get the adequate mechanical advantages or gear ratio by hydraulic means. Okay, हाइड्रोलिक मीन क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फ्लूइड कपलिंग के बारे में आपको मतलब नॉलेज होगा, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे मैं बता दूँ. बेसिकली थ्री main parts will be there, and between those two parts are pump or the impeller, and second part, that is the turbine. Okay, so that is why we are talking about this hydraulic means. Okay, so a torque converter is actually designed to obtain mechanical advantage or gear ratio by hydraulic means in the same manner as the gear for the mechanical means. Okay, जैसे gear mechanical के लिए use होता था, यहाँ पे hydraulic mean के लिए use होता है, that is this torque converter. Okay, so it provides simply the maximum gear ratio starting from rest and gradually decrease the ratio as the vehicle gains speed. जब जो अभी मैंने बोला कि पहले जो मतलब लोअर गियर में ये मतलब गियर रेशियो मैक्सिमम गियर रेशियो प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज द टॉर्क, and eventually it will be reduced as the vehicle gain the speed. Okay, so this point is also should be written. Okay, it provides maximum
gear ratio starting from rest and gradually decrease the ratio and gradually decrease the ratio as the vehicle gains speed. Okay, so this is the introductory part of torque converter. Okay, as I've already told you, from this schematic diagram you can clearly have a view that what are the different parts of a torque converter. Okay, so the main parts, that is this turbine, this impeller and the stator. Okay, whenever we are talking about the torque converter, basically these three parts are the main parts of a torque converter, because we know that flywheel is already connected, that is to the engine. Okay, and gearbox will always be there. Okay, so basically what we can say, okay, as the color, from the color you can guess. Okay, so this is the flywheel, this is the whole setup of your, that is your torque converter. Okay, and this is your gearbox. Okay, so this is the turbine and this is the pump. Okay, so you can see there, okay, the shaft or the crankshaft that is coming from the engine. Okay, that shaft is connected to directly to the impeller or the pump that we are talking about. Okay, this green color you can see. Okay, and the shaft that is coming from the turbine, that is connected to the gearbox. Okay, or simply the driving shaft that we are talking about. Okay, that means here I will tell you that this turbine is free to rotate upon the crankshaft. ओके, या फिर ये जो शाफ्ट के ऊपर ये फ्रीली रोटेट कर सकता है. ओके, सो दिस turbine or the shaft that is connected to turbine directly connected to the gearbox through the stator. Okay, that we are talking about, because this is the main part, or which is the main point where you will get the difference between this torque converter and your fluid coupling. Okay, so as it is also written here, impeller connected to the flywheel. Dekho, this is the impeller and it is connected to the flywheel and it is towards the gearbox, the position of this impeller. Okay, then turbine, okay, that is facing the impeller, and the main shaft of the gearbox is taken from the turbine through the impeller. Okay, main shaft jo hota hai, this is the main shaft that we are talking about. Okay, this is the main shaft. Okay, and that is or that is through the gearbox and it is connected to the turbine, and finally the stator. Okay, that is between the impeller and the turbine. Okay, now moving forward. Okay, so this is the actual what we call this torque converter. Okay, so this is the impeller. Okay, and this is the turbine. Okay, from the structure you can get. Okay, and this is this starter. Okay, okay, so one way roller sprag. Okay, या फिर वन वे रोटेटिंग क्लच इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट. ओके, सो वन वे रोटेटिंग क्लच दैट इज कनेक्टेड, यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, क्यों ये कनेक्टेड है वो जब मैं फंक्शन बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा. वन वे रोटेटिंग clutch. Okay, this is the turbine and this is the clutch assembly that is connected to the turbine, and this is the front cover. Okay, and this is the front cover.
and these are the different parts, and this is the input shaft uh, that is connected to turbine transmission. Okay, and this is the drive hub. Okay, so this is the actual uh, torque converter that we are talking about. Okay, so basically what we can say, the driving member or impeller. Okay, so here driving member, that is the impeller. Okay, which is connected to engine. Okay, this is connected to engine, लेकिन ये इंजन की तरफ नहीं रहता, क्योंकि प्रीवियसली आप देख सकते हो। ओके, ये यहाँ पे आपका इंजन रहता है, फ्लाईव्हील कनेक्टेड। देखो फ्लाईव्हील के ये जो इंजन शाफ्ट है इस तरह से होके यहाँ तक आया है, ठीक है। उसके बीच आपका टरबाइन रह जाता है, समझ में आ रहा है? ओके, connected to the engine. Okay, then driven member, that is, this is the turbine. Okay, so this is your driven member. Okay, so it is connected to the main shaft or propeller shaft, connected to main shaft or propeller shaft. Okay, and the stationary member, so this is the stationary member, that is the stator that we are talking about. Okay, स्टेशनरी मेंबर बोला जा सकता है या फिर रिएक्शन मेंबर भी बोला जा सकता है। ओके, विच इज फिक्स टू द फ्रेम ओनली। ओके, okay, so this is the main part. Okay, so this is the main part which is actually responsible to obtain the change in torque, okay, between the input and output shaft. Okay, इस पार्ट को अगर हम ओमिट कर दे, ओके, अगर बाकी टरबाइन और इंपेलर को जोड़ दे, देन इट विल बिकम अ फ्लूइड कपलिंग। बट यही जो पार्ट है जो आपका स्टैटर लगा है, दिस इज द ओनली पार्ट विच इज मेकिंग और विच इज making possible this or to obtain the change in torque. Okay, makes it possible to obtain the change in torque. Okay, understood? So this is the these are the main parts that we are talking about. Okay, so अभी मैंने बोला कि इसी मतलब पार्ट्स की वजह से आपका मतलब जो टॉर्क है वो चेंज हो सकता है। दैट मीन्स the fluid coupling that we are talking about does not have this member and cannot produce any kind of change in torque. वो खाली क्या करेगा? This is a coupling. Okay, that it will only transmit the rotation. Okay, it will not change the torque. अंडरस्टूड एवरीवन? सो यहाँ पे और एक पॉइंट करके यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लूइड कपलिंग, और सिंपली इट इज द डिफरेंस, फ्लूइड कपलिंग डज नॉट हैव एनी starter. Okay, okay, and this starter is mounted on a freewheeling one way clutch so that it can turn in only one direction. Okay, क्यों ये किया जाता है? तो यही जो वन डायरेक्शन का मूवमेंट ही इसको मतलब टॉर्क चेंज करने के लिए मतलब हेल्प करता है। ओके, एंड स्टेशनरी शाफ्ट दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन शाफ्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द गियर ट्रांसमिशन इन बैक ऑफ द कन्वर्टर, ओके, थ्रू द पंप टू सपोर्ट द स्टार्टर। ओके, सो स्टार्टर का मतलब पॉइंट थोड़ा हम लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। द स्टार्टर is mounted
on a freewheeling one-way clutch, on a freewheeling one-way clutch, so that it can turn in one direction, so that it can turn in one direction. And another point is stationary shaft called the reaction shaft, called the reaction shaft extends from the gear transmission, extends from geared transmission in back of the converter, in back of the converter through the pump to support the stator, through the pump to support the stator. Okay, and obviously the driven member here is the turbine, okay, which faces the stator, and it is splined to the input shaft. Okay, input shaft के जो spline जो मतलब spline connection रहता है, okay, and which rotates inside the reaction shaft and connects curved blades to project most of the oil into a hollow cylinder, okay, that is parallel to the axis of rotation. Okay, so यहाँ पे ये जो मतलब ये जो टरबाइन और जो इम्पेलर का जो सेटअप ये एक बॉक्स के अंदर रहता है, ओके, जिसके भीतर आपका ऑयल, आप यहाँ पे पूरा ऑयल मतलब पूरा पैक्ड रहता है. ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है, ओके, सो बेसिकली इट इज, मैंने अभी बोला, दैट इज स्प्लाइन टू द इनपुट शाफ्ट which rotates inside the reaction shaft, okay, and connects the curved blades to project most of the oil into the hollow cylinder parallel to the axis of the rotation. Okay, so basically यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑयल कहाँ से आता है, ऑयल दैट विल कम फ्रॉम द पंप इटसेल्फ, ओके, क्योंकि पंप क्या करेगा, जो अंदर का जो ऑयल होगा उसको पंप करके दैट विल इट विल थ्रो टुवर्ड्स द टरबाइन. ओके, जैसे कि मतलब सपोज मान लो कि दो टेबल फैन आमने सामने आपने रखा है, एक टेबल फैन को आपने स्विच कर लिया, ओके, सो ऑब्वियसली उसका जो हवा होगा दैट विल हेल्प टू रोटेट द अदर फैंस ब्लेड्स. ओके, सिंपली यहाँ यहीं पे भी वही मतलब चीज यहाँ पे हो रहा है. ओके, सो जनरली क्या होगा, ये जो पंप यहाँ पे मतलब जो ऑयल है ये इसको पंप करके टरबाइन की तरफ छोड़ेगा, एंड वो टरबाइन जो क्या करेगा, टरबाइन उसी पंप का जो मतलब ऑयल आ रहा है इसकी तरफ, ओके, एंड उसी ऑयल फोर्स की वजह से ये टरबाइन क्या होगा, धीरे धीरे रोटेट करेगा. ओके, सो धीरे धीरे रोटेट जो कर रहा है, रोटेट जो कर रहा है ये क्या करेगा, फिर से ये जो ऑयल को मतलब उसका जो ब्लेड का पोजीशन ऐसे हो, मतलब सपोज मान लो कि है, ये क्या करेगा, बाहर को फेंकने की कोशिश करेगा एज द केसिंग इज देयर. ओके, सो ये बाहर को ना जाके क्या करेगा, ये इसी के थ्रू आने की फिर से कोशिश करेगा, सो दैट ऑयल विल नॉट बी लॉस्ट. ओके, दिस ऑयल अगेन कम टुवर्ड्स द पंप. ओके, एंड इस तरह से आपका मतलब एक साइकिल जैसा मतलब जो ऑयल का मतलब जो फ्लो है वो चलता रहेगा. Okay, between the pump and the, or between the impeller and the turbine, right? Okay,
So now moving forward, what are the operation phases? Okay, how the torque convert works. Okay, when suppose the engine is running idle, okay, or suppose मान लो कि engine चल रहा था, we are applying brake, okay, the pump produces a slow circulation of the oil. Okay, ये जो pump है यहाँ पे जो मतलब suppose idle condition में there will be slow circulation of oil. Okay, as the engine drives it, okay, this slow circulation of oil is not sufficient to move the turbine. Obviously ये जो slow मतलब circulate कर रहा है उसमें से oil का मतलब एक जो oil jet जैसे water jet आपको मतलब प्रोड्यूस करना पड़ता है टू रोटेट द टर्बाइन, उसी तरह से मतलब यहाँ पे जो ऑयल जेट फॉर्मेशन नहीं हो पाता. ओके, सो when the throttle is open wide, okay, and engine speed is increasing, okay, gradually it is increasing, the pump move faster projecting the oil towards the turbine. Okay, जब धीरे धीरे मान लो कि स्पीड पकड़ना शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, पंप क्या करेगा, इट विल प्रोजेक्ट दोज ऑयल टुवर्ड्स द टर्बाइन. ओके, but the oil is still having less force, okay, which is insufficient to turn the turbine. Okay, अभी भी मतलब टरबाइन को घुमाने के लिए वो मतलब जो फोर्स है वो इनसफिशिएंट है. Therefore the oil return back to the pump which almost no loss of velocity except due to the friction. Okay, so oil क्या करेगा, धीरे धीरे ये यहाँ पे जा रहा है लेकिन घुमा नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, फिर से इसी के अंदर ही तो है ऑयल, तो फिर से क्या करे वो पंप होके फिर से पंप की तरफ आ गया. ओके, so the net effect of the redirection of flow is to increase the pump output, and the pump output under this condition is the output velocity that is creating because the engine torque. Okay, बेसिकली क्या होता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ठीक है, मैं लास्ट में एक आपको वीडियो भी दिखा दूंगा. ओके, तो उससे और ज़्यादा आपको मतलब समझ में आ जाएगा. सो यू कैन सी ऑल दोज पार्ट्स, दैट इज टॉर्क कन्वर्टर हाउसिंग, ओके, कनेक्टेड टू द फ्लाईव्हील. ओके, सो दिस इज द पंप, ओके, दिस इज द फ्लाईव्हील. ओके, फ्लाईव्हील से मतलब इधर तक आया है, ठीक है, ये इस कलर और कलर मैचिंग से आप पता लगा सकते हो. ओके, देन ये बीच में जो येलो कलर का है दैट इज द स्टार्टर. ओके, एंड दिस इज द पंप. ओके, दिस इज टर्बाइन आउटपुट शाफ्ट जो कि कनेक्टेड होगा आपका गियर बॉक्स में. ओके, सो यहाँ पे जो मतलब ऑयल यहाँ पे आएगा. ओके, सो इसका जो ब्लेड है यहाँ पे स्ट्राइक करेगा. ओके, स्ट्राइक करने के बाद अगर ऑयल का फोर्स उतना ज़्यादा नहीं, इसको घुमा नहीं पाएगा, ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद अगर स्ट्राइक कर रहा है तो फिर से ये क्या करके ब्लेड के थ्रू जाके फिर से ये क्या करेगा, रिटर्न आ जाएगा पंप की तरफ, क्योंकि पंप तो पंपिंग तो चल रहा है क्योंकि इंजन धीरे धीरे मतलब स्पीड इनका इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ऐसा करते करते एक पर्टिकुलर स्पीड जब तक आ रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव होने के बाद, और द ऑयल फोर्स, व्हेन द ऑयल फोर्स विल बी सफिशिएंट और ऑयल जेट फोर्स विल बी सफिशिएंट टू मूव द और टू रोटेट द टर्बाइन. ओके, तभी जाके टर्बाइन का रोटेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगा. ओके, सो यहाँ पे जो हमने बोला कि जो रीडिरेक्शन हो रहा है जो ऑयल का पंप की तरफ, ओके, द नेट इफेक्ट ऑफ द रीडिरेक्शन ऑफ फ्लो इज टू इंक्रीज द पंप आउटपुट. ओके, the pump output under this condition is the output velocity and that is creating because of the engine torque. Okay, और क्या है, input velocity of the redirected oil, okay, it is also adding to that. Okay, so a built up output velocity of 2 to 3 times the output velocity due to the engine alone is achieved when the turbine is stationary. Okay, so this makes the turning force of the turbine to 3 times that of engine. ओके, सो ये जो पंप बार बार मतलब इधर उधर मतलब इसको ना घुमा के फिर से पंप आउट होके मतलब आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो वेलोसिटी ऑफ द जेट है वो धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है. जो जितना इंजन आपका मतलब रोटेशन की वजह से वो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, उससे ज्यादा क्या कर रहा है, ड्यू टू दिस ऑयल रीडिरेक्शन ऑफ द ऑयल द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड. ओके, और बिल्टअप वेलोसिटी जिसको आप बोल सकते हो, या फिर बिल्टअप आउटपुट वेलोसिटी, दैट इज a term is built up output velocity. ओके, सो इसमें फिर से आपका ऐड क्या हो रहा है, जो रीडिरेक्टेड ऑयल है उसका वेलोसिटी आपका ऐड हो रहा है. ओके, सो अब तक जो स्टेशनरी था, अब क्या होगा, दिस मेक्स द टर्निंग फोर्स ऑफ द टर्बाइन टू
3 times that of engine. This increased or the increased torque of the turbine enables it to rotate. Okay, so इसी के वजह से जो आपका torque increase हो रहा है. Okay, so this enables to or this enables the turbine to rotate, and thus drives the input shaft, which in turn transmit the power to geared section of the transmission. Okay. जो तो इसी ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे. ओके, फर्स्ट वन इज स्टॉल, ओके, सेकंड वन इज द एक्सेलरेशन, एंड थर्ड वन इज द कपलिंग. कपलिंग क्यों? यहाँ पे आपका टॉर्क कन्वर्टर का काम कुछ नहीं होता. ओके, इसीलिए डायरेक्टली इसको कपलिंग नाम दिया गया है. ओके, सो नो फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग टॉर्क. ओके, ठीक है. So what is happening in the stall? So in stall phases or in the stall phase, the prime mover is applying power to the impeller. मतलब जो engine power that is already applied to the impeller, but that turbine cannot rotate, जो अभी मैंने बोला. ठीक है, क्यों? मतलब that oil जो jet force होना चाहिए turbine को rotate करने के लिए, उतना force अभी तक produce नहीं हो पाया. That is the stall position. Okay, then come to the acceleration. When the speed is increasing gradually, the load is accelerating, but there still is a relatively large difference between the impeller and the turbine speed. अभी क्या हो रहा है, जितना impeller जितना स्पीड में घूम रहा है, क्योंकि टर्बाइन तो धीरे धीरे अपना स्पीड पकड़ रहा है, so there will be a difference or huge difference between the speed of the impeller and the turbine. Under this condition, the converter will produce the torque multiplication. Okay, टॉर्क मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, जो मैंने बोला था कि आपका जो ऑयल बार बार मतलब जो जाके जो फोर्स आपका जनरेट हो रहा है, ओके, दैट विल सिंपली इंक्रीज द टॉर्क. ओके, या फिर जो रीडायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज टू इंक्रीज द पंप आउटपुट, एंड द पंप आउटपुट अंडर दिस कंडीशन, ओके, इज द आउटपुट वेलोसिटी that is creating because the engine torque, okay, plus the input velocity of the redirected oil, जो दोनों मिलके आपका built up velocity बनाते हैं, that is simply due to the increased torque. Okay, so the converter will produce the torque multiplication. Okay, when you are having a higher speed or top speed of the vehicle, okay, the torque converter is behaving in a manner similar to a simple fluid coupling. तो यहाँ पे simple fluid coupling कब हो गया? हमको मालूम था कि fluid coupling में starter जैसा कुछ मतलब डिवाइस नहीं है. ओके, सो यहाँ पे तो स्टार्टर लगा है, मतलब यहाँ पे स्टार्टर का एक लॉकिंग या फिर अनलॉकिंग पोजीशन रहता होगा. ठीक है, अगर लॉक्ड है दैट मीन्स इट इज एक्टिंग लाइक अ टॉर्क कन्वर्टर. इफ इट इज अनलॉक्ड, okay, that means it is acting like a fluid coupling. So the main function of a torque converter that is done by this stator only. Okay, so I want to show you something. Okay, so talking about the stator. Okay, so ये स्टार्टर में क्या होता है, आपका जो ब्लेड रखा रहता है दैट इज काइंड ऑफ 90 डिग्री. ओके, सो ये टरबाइन से जो फ्लूइड स्टार्टर के थ्रू जाता है, सपोज मान लो कि टरबाइन का जो मतलब क्या है, फ्लूइड जो टरबाइन से मतलब रिटर्न होके आ रहा है, उसका मतलब फोर्स बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मतलब स्ट्राइक करेगा. ओके, मतलब कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो कुछ इस तरह से होके इस तरह से रहता है. ठीक है, सो अगर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रोटेट द स्टार्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं यहाँ से पर्टिकुलरली आपको मतलब ठीक से व्यू नहीं आ रहा होगा. ओके, लेकिन वेन का जो 90 डिग्री शेप जो रहता है, मतलब एंगल जैसा रहता है, अगर मान लो यहाँ पे फ्रंट साइड में अगर वो मतलब स्ट्राइक करता है, तो ये ट्राई करेगा ऑपोजिट वे में रोटेट करने के लिए. तो ऑपोजिट वे में तो रोटेट अगर करेगा तो मतलब ये इसी रोटेशन को मतलब रिफ्रेन करने के लिए,
और या फिर रोकने के लिए एक वन वे क्लच यहाँ पे कनेक्टेड रहता है जो कि इसको अदर वे में रोटेट करने से रोकता है, क्योंकि ये रोटेट किसके साथ करना चाहिए, टरबाइन और इंपेलर के साथ रोटेट करना चाहिए. So whenever the speed is increasing, obviously the jet or the oil that is coming from the turbine, it will have also higher velocity, so it will strike at the back end of this particular vane that is connected with the stator, and it will rotate. Now it will start to rotate in the direction of the turbine itself. Okay, so इसी तरह से यहाँ तक जो ये तो रोक के रखा है, तो यहाँ पे जो मतलब और रोक के रखा था और इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है, दैट इज सिंपली मल्टीप्लिकेटिंग और सिंपली इंक्रीजिंग द टॉर्क हियर. ओके, इसको घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, सो दैट टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय दिस टॉर्क कन्वर्टर. एंड ऑब्वियसली हमें हम जब स्पीड पकड़ लेता है, ओके, जब स्पीड पकड़ लेता है, द स्पीड ऑफ द इम्पेलर एंड द टर्बाइन विल मैच. ओके, इसीलिए एक लॉक आपका क्लच का भी एक मतलब अरेंजमेंट रहता है जो कि इन दोनों को लॉक कर देते हैं, जो कि हाई स्पीड में दोनों का रोटेशन पूरा सेम रहेगा. ओके, सो उस टाइम में इस स्टार्टर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके, टू multiplicate or to increase the torque. So in that particular time it will act as a coupling. Okay, so this is how the torque converter works. Okay, so I think you have understood the operation of the torque converter. Okay, and what are the failures that also we will talk. Okay, overheating obviously. Okay, continuously high level of slippage resulting in the damage to the seals and retain the fluid inside the converter. कभी कभी इसके लिए आपका मतलब जो टॉर्क कन्वर्टर रहता है वो स्पेशली जाके फिर से मतलब वर्कशॉप में उसको फिर से बनाना पड़ता है, उसका केसिंग खोल के. ओके, देन स्टार्टर क्लच सीजर. The inner and the outer element of one-way starter clutch become permanently locked together, thus preventing the starter from rotating during the coupling phase. Okay, तो ये सबसे बहुत मतलब सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर स्टार्टर इन दोनों के साथ नहीं घूमेगा तो इन दोनों का मतलब स्पीड कभी मैच ही नहीं हो पाएगा, जो कि प्रॉब्लम करेगा व्हेनेवर द व्हीकल इज इन टॉप स्पीड और टॉप गियर. ओके, देन स्टार्टर क्लच ब्रेकेज, ए वेरी दैट इज मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ पावर दैट कैन कॉज शॉक लोडिंग एंड द स्टार्टर क्लच रिजल्टिंग इन द ब्रेकेज. ओके, अगर शॉक लोडिंग या फिर ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ द पावर मतलब होता है तो वहां पे क्लच ब्रेकेज का भी चांसेस रहता है. देन ब्लेड डिफॉर्मेशन एंड फ्रैगमेंटेशन. ओके, and it is also related to the different types of external loading और जो आपका मतलब excessive heating of the converter जो रहता है उसकी वजह से ये होता है. okay, and the last one, that is ballooning. Okay, and it is the operating a torque converter at a very high rpm may cause the shape of the converter housing to be physically distorted due to internal pressure. Okay, क्योंकि भीतर आपका दो मतलब rotating device, that is pump and turbine, those are rotating. Okay, and in the higher speed they will be rotating with a very higher speed themselves. Okay, so that is also this is also kind of heating problem also. Heating की और ज़्यादा heating की वजह से धीरे धीरे क्या हो सकता है, कन्वर्टर का शेप आपका चेंज हो सकता है. So these are different types of failure problem, and this is it about your torque converter. Okay, basically it is used in automobile transmission or automatic transmission system. Okay, and it is used between the engine and the gearbox. Okay, so thank you for listening.